Hello everyone, how are you? I hope you are a little bit good. Welcome to my channel NK. What is it about article? What do you mean by article? Article is it a small essay, a short essay, a written narration on a certain topic? Yes, it is right. When you are going to purchase something to a stationery shop, you are asking for a pen, a pencil, a book, or a notebook, whatever. And what you are telling to the shopkeeper? Give me so and so articles. Here, article means commodities. But what we are doing here today? Discussing about these things? No, not at all. Our topic to discuss here today, it is article, the linguistic form, the most important factor in grammar, A and D, the three words that we discuss about today in our class. In our previous classes, we have already discussed the basic usage of articles and we have discussed articles are of two types, two categories. What are they? Definite and indefinite. In indefinite categories, there are two articles, a or an, what we use in generally before any common noun. But when we specify some noun in the sentence, there we use definite article. And as I have promised in my previous class that we shall group through all the rules of articles in the sentence. And today we shall discuss about the rules of articles, how to use articles in the sentence so that we can we can make our sentence correct. Rule 1. To particularize a noun in the sentence. When we write a noun in the sentence and we specify it that which is talking about any person or thing which is discussed previously in the sentence by someone. Just like example, the worker in the फैक्ट्री आर ऑन स्ट्राइक. आप बाहर गए, आपने सुना, आपको पता चला कि फैक्ट्री के सारे वर्कर स्ट्राइक पर चले गए. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? किसको हमने फोकस किया? वर्कर को. हियर वर्कर, सो दैट वी यूज आर्टिकल डी, द डेफिनाइट आर्टिकल, to specify the workers in the sentence. Another sentence, this sky is cloudy. अब बाहर गए, आपको आकाश बहुत घना बादल से छाया हुआ नजर आया. कोई कहता है कि नहीं, बाहर मत जाओ, बारिश होने वाली है. इन सच केसेस स्काई को हम पोज करेंगे, स्काई को हम मेंशन करेंगे यूजिंग द डेफिनाइट आर्टिकल. यहाँ हमने इन दिस सेंटेंस वी हैव स्पेसिफाइड स्काई, आसमान क्या है? घने बादलों से छाया हुआ है. द स्काई इज क्लाउडी. जैसे कि आजकल बिल्कुल सुबह सुबह कि हम बाहर जाते हैं तो घना कोहरा छाया होता है. द वेदर इज फॉगी. बाहर मत जाओ, घना कोहरा छाया हुआ है. हियर वेदर को भी हमने स्पेसिफाई किया बाय यूजिंग आर्टिकल दी. कम टू द नेक्स्ट रूल. दी इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट इज रेफर्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास. एक पूरे समष्टि को जब एक नाउन रिप्रेजेंट कर रहा हो, इन सच केसेस वी यूज दी. जस्ट द मैन ऑन द रोड इज ए बेगर. आप पूछोगे कि क्यों द मैन ऑन द रोड इज ए बेगर? अपने रोड में बहुत सारे लोगों को देखा, क्या सबके सब बेगर है? नहीं. जो भीख मांग रहा हो, आप उसी के बारे में बात करेंगे. सो हियर वी यूज आर्टिकल डी, द डेफिनाइट आर्टिकल. हमने उस बेगर को मेंशन किया इन दिस सेंटेंस में. एंड द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल. आप पूछोगे क्यों? इज ए डोमेस्टिक, एक काउ डोमेस्टिक एनिमल नहीं हो सकता? नहीं. जितने सारे जो काउज होते हैं ये गृहपालित प्राणी होते हैं, गृहपालित पशु होते हैं.
The cow is a domestic animal. The cow is very useful to us. The cow gives us milk. Hmm. Come to rule 3. Here the is used before a noun which has become a definite and adjective. We use second time in the sentence. What? My brother gave me a watch. भैया ने मुझे एक घड़ी दी. तो क्या हुआ? हमने डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज किया? यस. उसी वाज को हम जब सेंटेंस में दोबारा यूज करेंगे तभी हम क्या यूज करेंगे? कैसे लिखेंगे उसको? ए वॉच इज ओल्ड वन? नो. दी वॉच ये वही घड़ी है जिसको भैया ने दी. वो एक पुरानी घड़ी थी. दी वॉच इज एन ओल्ड वन. देयर इज ए मैन आउटसाइड. बाहर एक आदमी खड़ा है. चलो देखो कोई खड़ा है. क्या कर रहा है? The man is asking for some food. जो आदमी बाहर खड़ा है वो कुछ खाना मांग रहा है. तो उसी आदमी को जब हम नेक्स्ट टाइम सेंटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? The man is asking for some food. And in our next classes we shall learn about all the rest rules, how to use definite article in our sentence. And another thing, the or the major difference while we are pronouncing the and the. I shall discuss in my next classes. And in today's class, I am having some certain question for you, and you answer me in the comment box. I have certain homework for you. Answer me on your comment box. Question number 1. Put the in your sentence where it is necessary. Put the article in your sentence where it is necessary. Where it is necessary. Number 1. Boys of our class are very naughty. Boys of our class are very naughty. Number 2. Rose is the sweetest flower among all the flowers. Number 3. There is a dog near the house. The dog is walking. And these are your homework of today, and I hope you all will answer me correctly in your comment box. And if you like this video, then stay tuned with me. Like,
share, and subscribe my channel so that in next classes I shall come with very useful contents for you. Thank you all.